Hello everyone. In this video, we'll try to understand the basic concepts of, we'll understand its definition and what is the connection of logarithms with another chapter which we have studied in the lower class called exponents. So before I start with logarithms, I just want to summarize this exponent part a bit, because both the things are essentially related to each other. Exponents and logarithms are related to each other. So exponents are generally denoted by the form a to the power m, where a is called the base of the exponent and m is called the index or exponent of a, right? And then there were certain laws of exponent which we have already studied in the lower classes. They were a to the power m. I'm just writing them here and I presume that you know them. So these were the certain laws of exponents which you have studied in the lower classes. Be particularly careful about the fifth part, which says that nth root of a is equal to a to the power 1 upon n. But this particular notation works only when n is a natural number. So this notation will work only if a is a natural number. That means कि हम ऐसा नहीं लिख सकते. It does not make any sense कि you write कि what is 1/3 root of 5. Now it is not equal to 5 to the power 3. This is incorrect. You cannot use this notation here. आप nth root जब लिखते हो तो n should be a natural number. It cannot be a fraction value. It cannot be negative. So these are the basic laws of exponent. Now coming down to logarithms, the question is what is meant by, or what is the value of log a to the base b? What is the value of this? Okay, what is the value of this expression? So when I write this expression, the first requirement is you should know how to read it. इसको बोलते कैसे? तो इसको बोलते हैं log of a to the base b. And we read it in this way. इसको ऐसा read करते हैं. It is called log of a to the base b. ठीक है? b is again called base. जैसे एक्सपोनेंट्स में होता है ऐसे यहाँ पे भी बेस होता है एंड b को हम बेस लिखते हैं. और बेस जनरली जो है log a तो एक साथ लिखा जाता है, b थोड़ा सा नीचे लिखते हैं उसके. एज अ सब्सक्रिप्ट वी राइट बेस b. सो नाउ द क्वेश्चन वाज कि इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट, व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड हियर? log a टू द बेस b का क्या मतलब हुआ? तो log a टू द बेस b मतलब हुआ बच्चों कि मैं आपसे पूछ रहा हूं विच पावर और इंडेक्स of the base b will give the value a. So this notation is actually asking you this question. It is asking you this question. So for example, if I write log 16 to the base 2, log of 16 to the base 2. So what I am asking you is, this implies that which power of 2, which power of base which is 2 gives you 16, gives 16. So now obviously which power of 2 gives me 16? I know that 2 to the power 4 is 16. So therefore the value of this expression is equal to 4. The value of this expression is equal to 4. Again, for example, suppose if I ask you that what is the value of, for example, what is the value of, let's say, log of 27 to the base 3. What is the value of this expression? So essentially what I'm asking you is that which power of base 3, which power of the base 3 will give 27? So answer, we know that 3 cube is 27. So therefore which power of base gives you 27? Answer is this value is equal to 3.
दिस इज द सिंपल आइडिया ऑफ लॉगरिथम. इट इज एक्चुअली कन्वेइंग द सेम इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सपोनेंट्स दे रहा था, बट इन अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. So I get the definition of logarithm now. I write the definition. It means log a to the base b equal to k implies कि base की power k will give you a. This is the meaning of logarithm. This is generally called logarithmic notation. This is logarithmic notation, and the right hand side is exponential notation. This is exponential notation, but the information conveyed by the two are same. They give you the same information, but the representation is different. All right. So now suppose if I ask you that, suppose I give you these three notations and I ask you to write them in logarithmic form. Okay, suppose I ask you to write these notations in logarithmic form. So how do we write them? So it's simple. It means, let's say that we start with the first part. Which power of 7 gives me 49? Answer is 2. So log of 49 in the base 7 or to the base 7 is 2. The key idea to remember here is that the base is same in exponent as well as the logarithm. You should be having the same base. यहाँ पे भी आपका पास base 7 है exponent में, log का भी base 7 है, लेकिन the information is other way around. This is the power. 7 to the power 2 gives you 49. है ना? This definition says that base to the power k gives you a. ठीक है? It goes like base to the power k will give you a. Base to the power k gives you a. And base is same in exponents as well as logarithm. So now if I look at the second one, exponents में it is 8 to the power minus 2 is 1 by 64. So this means logarithm of 1 by 64 in the base 8 is minus 2, because 8 to the power minus 2 should give you 1 by 64. So actually in the logarithmic notation, the right hand side must be the index of exponent. राइट हैंड साइड में पावर आनी चाहिए हमेशा. आप देखो यहाँ पे पावर वॉज 2, राइट साइड इज 2, पावर इज -2, राइट साइड इज -2. बेस की जगह फिक्स है, बेस अपनी जगह है. तो जैसे अगर हम इसको लिखें, थर्ड वाले को देखें अगर हम लॉगरिथमिक में, तो मुझे पता है पावर राइट साइड पे आनी चाहिए, दिस शुड बी 0 एंड दिस इज लॉग. बेस वही होगा जो यहाँ पे 5. सो यू गेट लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5 is 0, बिकॉज 5 to the power 0 will give you 1. ठीक है. Let's take another example. Suppose now we take the other way around. Now this time the question is, write in exponential form. Write in exponential form. So suppose if I give you log 16 to the base 4 is 2, log 1 by 9 to the base 3 is -2. So now we have to write this in exponential form. So that means base to the power 4, right side हमेशा power होता है, base to the power 4 gives you 16, 4 to the power 2 gives you 16, base to the power -2 gives you this. So that means 3 to the power -2 is equal to 1 by 9. This is called exponential notation. The above is called logarithmic notation. Logarithmic notation में हमेशा ध्यान रखो, बेस दोनों जगह सेम होता है. बेस तो वही रहेगा जो एक्सपोनेंट में था, और राइट साइड जो होता है लॉग का, दैट इज द पावर और इंडेक्स और द एक्सपोनेंट. राइट. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या हम किसी भी नंबर का लॉग देख सकते हैं या क्या हर नंबर का लॉग डिफाइंड है. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, लेट्स से
-8 to the base 2, या फिर लेट्स से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 0 to the base 3, or let's say what is the value of log of 7 to the base 1, for example, if I write these notations. So let's think about them. एक बार सोच के देखते हैं. इसका मतलब हुआ कि which power of 2, let's say which power of 2, I assume that this power is k, gives you -8. Now this is impossible because 2 to the power k will be a positive number. एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एक्सपोनेंट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है. दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. इट कैनॉट बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर. दिस इज नेगेटिव, लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव, दे कैनॉट बी इक्वल. सो देयर इज नो के, नो के एग्जिस्ट, नो के विल एग्जिस्ट. इन द सेम वे, सपोज इफ आई आस्क यू दैट log 0 to the base 3, now that means which power of 3, let's say we assume this power is k, so 3 to the power k must be 0. Again impossible because this side is positive, this side is 0. How can a positive number equal to 0? It cannot happen. This is impossible. So again the answer is no k exists. ये defined ही नहीं है. This term is not defined. Yeah, let's say if I ask you what is log 7 to the base 1, that means which power of 1, say k, gives you 7. Which power of 1 gives you 7? तो अब मुझे पता है कि 1 की कोई भी पावर 1 ही आएगी. This is always equal to 1. और राइट साइड पे 7 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगेन there is again no value of k. So what we have looked here is that in certain cases, like the previous question, these expressions were well defined. इनका एक वैल्यू आ रही थी. In the first case the answer was 2. इसमें आंसर was पिछले अगले वाले में -2. लेकिन यहाँ पे they are not defined. तो क्या ऐसा होता है कि log कभी डिफाइंड हो कभी ना हो? बिल्कुल होता है. तो log, this is the result which you should learn. Log a to the base p is defined only when a is greater than 0, मतलब जिस नंबर का log देख रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, and base should be positive, बेस में नेगेटिव नहीं हो सकता, and base should not be equal to 1. ये तीनों कंडीशंस बच्चों सेटिस्फाई होंगी तब log a to the base p डिफाइंड होगा. There are three conditions. जिस नंबर का log देखते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए. सो दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव. बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता. दो कंडीशंस बेस पर हैं, 1, 2, और एक कंडीशन log के साथ जो एक्सप्रेशन है उस पर है. अगेन दीज आर कॉमनली कॉल्ड डोमेन कंडीशंस, क्योंकि ये log के इनपुट से रिलेटेड है. दिस इज द सेकेंड टाइम दैट वी आर लुकिंग एट द डोमेन कंडीशन बेसिक मैथ्स में. इससे पहले हमने देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है. जैसे मान लेते हैं कि अब अगर हम वापस से ऊपर वाले एग्जाम्पल पे चलें, तो इफ़ आई लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट नाउ, इफ़ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, व्हाट यू फाइंड इज, इसमें आपके पास a की वैल्यू, दिस क्वांटिटी a इज नेगेटिव. अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू नेगेटिव है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड. a पॉजिटिव होना चाहिए. लॉग, जिसका भी लॉग देख रहे हो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे भी आप देखो, हम लॉग देख रहे हैं 0 का, दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव. 0 का लॉग नहीं देख सकते, पॉजिटिव नंबर का लॉग देख सकते हैं. यहाँ पे जिस नंबर का लॉग देख रहे हो वो पॉजिटिव है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस 1 हो गया. बेस 1 नहीं हो सकता. बेस पॉजिटिव तो होना चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता. यू कैन नॉट हैव बेस इक्वल टू 1. द थर्ड कंडीशन दैट वी आर लुकिंग. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ logarithms. You have to learn this definition. This is the definition of log. And then there was the domain conditions on logarithms. And obviously these are some very trivial or simple results which you can note yourself, that if I write log a to the base a, and let's say if I write log of 1 to the base a, and suppose if I write log of 1 by a to the base a, और suppose मैं आपसे बोलूँ कि भाई इनकी वैल्यू क्या होगी. I assume that in all the cases a is greater than 0 and I assume that a is not equal to 1. I assume this in all the cases, right? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी.
तो आप देख सकते हो आराम से कि द वैल्यू फॉर द फर्स्ट पार्ट बिकम्स 1, क्योंकि इसका मतलब है कि बेस की कौन सी पावर करने पे मुझे a मिलेगा, तो आंसर इज 1. बेस टू a टू द पावर 1 विल गिव यू a. विच पावर ऑफ a गिव्स यू 1, तो आंसर इज 0. विच पावर ऑफ a गिव्स यू 1 बाई a, -1, है ना. वी नो दैट a टू द पावर -1 इज एक्चुअली 1 बाई a. वी नो दैट a टू द पावर 0 इज 1. वी नो दैट a to the power 1 is a. So this is the basic idea of logarithms. In the next video we'll be taking some questions where we'll evaluate the values on logarithm. In the meantime, just revise everything in the given video.